Hello Jammers, welcome to Technical Huda. So friends, this is my first YouTube video which is on a topic front-end back-end. In this tutorial, I'm going to teach you how to create a front-end back-end project. So friend, many people get confused on a topic that what is front-end back-end. I'll give you one example. Facebook, you have a interface on which you can give your email, password, and if you will click on login, it will redirect you on the next page. So friends, Facebook is the page we design is the front end, and the email, password, where it gets stored is called database. Facebook has its own database. So in this way, they have created the front end back end system. So the software required for front end back end is Notepad++, Google Chrome, and WAM server. These three softwares are required for us. So I'll show you from where you can download. So friends, the site name is download.cnet.com. From here, you can download the WAM server. Depending upon the PC requirement, you should download whether it is 64-bit or 32-bit. So the Notepad++, you can use any good text editor. I'm using Notepad++. You can use any browser. I'm using Google Chrome. So friends, let's start the front-end back-end project. So friends, I'll divide this project into 4 parts. Designing 4 or 3 parts. I will divide this project, and I'll make it sure that you will get it as soon as possible. So let's start, friends. doc type html. Okay, ht now is html. Okay, /html. Okay, the whole content of a web page is between HTML tags and head. Okay, title, whichever title you want to give, you can give it. I'll give it login form. Okay, now we will design the body part. So friends, in the first part, I'll show you how only the designing part of the login page. Okay, first save it. Friends, make sure that you should save this project. Whenever you download WAM server, you should save this project in WAM64. The automatically created folder is WAM64. In that www folder, and create a folder, new folder, and give it a name login. So front end, back end. Okay, now just give the name index.php and save the file. Okay, now you will see that the color of the text has been changed. So let's type the things now. Okay, now we will create a new file, and let's save this file. Going back, href and css is the folder name,
style style dot css. Okay. Background equals to city dot jpg is the image. I have this image city. Okay, city image. I am showing you the file location. Just copy this image and go to a www folder and front end back end and just paste it here. Okay, city.jpg. okay, now division id, just main wrapper. Okay, div. Okay, then let's create a form method. This is for database relating thing. Method post enc type. What type of data you are मतलब means you आप क्या expect मतलब accept कर रहे हो. What type of data you are accepting. Multipart / form form data. Okay, now / form form. Okay, table table. Let's align center. Okay, style, let's give it style something. Color means the text inside that table will be white. Okay, and width of the table I will give you something around 365 px. Position relative. From top I want it to something around in center 200 px. Border 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 1. Okay, td style this style. Okay, position. I'm doing this just because to save time. If you create more and more things, so that the time will be less required for your project, and you can create as soon as possible fast. Left 50 px. These are the standard dimensions I am giving. This is suitable for table. Background. Color. Hash 1D2247. This is standard color.
I'll give you a link from where you can get color codes. The link should be given into the description of the video. Okay, from in this center, and this at center, H3, center. Okay, and just give it here, login form. Okay, /td. Okay, done. We have created the first row, and now second row. Center, in this section we'll like email or username. Okay, and now give an input text, input tag in this type is text, and name, email, placeholder, type email. Okay, so type username. Okay, username, these names are we are using for the database section coding, PHP coding. Similarly, copy this, and give it the name, पासवर्ड, टाइप भी पासवर्ड दे दीजिए, नेम भी पासवर्ड. सो हम काफ़ी सिमिलरिटी कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, कार्डी पासवर्ड. एंड फिर से अब हम इसको हम कॉपी किए हुए, सॉरी, फिर पेस्ट कर देते हैं. अब हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, इसको सेंटर डाल देते हैं, सेंटर टैग के अंदर. सिमिलरली यहाँ से /CNTR सेंटर एंड टाइप SUBMIT सबमिट. यूज़र नेम नहीं चाहिए हमें, नेम इसको देंगे हम SIGN, साइन इन. ओके, साइन इन. प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हमें वैल्यू देना है. यहाँ पे वैल्यू देंगे हम लॉगिन, एंड थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देंगे हम यहाँ पे, STYL स्टाइल, और बैकग्राउंड कलर देंगे इसको, बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम इसको #42729B. ओके, एंड सेमीकोलन. ओके, कलर वाइट, मतलब जो लॉगिन होगा, लॉगिन जो दिखेगा वैल्यू वो वाइट में दिखेगी. एंड विथ देंगे 100 px का,
GIGST हाइट देंगे समथिंग अराउंड 40 px. ओके. पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं. रिलेटिव फ्रॉम टॉप 5 px. ओके. ये हो गया हमारा लॉगिन बटन की कोडिंग. ओके. इन सिमिलर वे अभी ये जो सेंटर से है ना, इस सेंटर से जो भी है इसे कॉपी कर दीजिएगा और यहीं पे पेस्ट कर दीजिएगा. एक्चुअली देखा जाए तो ये सेंटर यहाँ पे आएगा. ये भी यहाँ से. सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इसको रजिस्टर कर देना है. सबमिट को बटन कर देंगे. बटन यहाँ पे रजिस्टर. वैल्यू भी रजिस्टर दे देंगे. GIS रजिस्टर. बैकग्राउंड हम चेंज कर देंगे. मैं आपको एक लिंक नीचे दी हुई है, उस लिंक को रेफ़र करके आप ये वाला जो साइट है ना, HTML कलर कोड्स, यहाँ से आप कलर कोड्स कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा. ओके. और इसको थोड़ा 150 दे दीजिए विड्थ को. एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा मसला है. हमने हाइट इस कोलन चाहिए, सेमी कोलन. ओके. बस. और हाँ, ये सेंटर को यहाँ पे Ctrl+X Ctrl+V. यहाँ पर भी सिमिलर वे में सेंटर को TD टैग के अंदर डालना है, कॉलम टैग के अंदर. ओके. Ctrl+X Ctrl+V. okay, and then save it down and let's see the change what happens. So friends, आप जैसा कि देख रहे हैं बटन्स के कलर चेंज हो गए. एंड नाउ अब हम विथ ये जो हाइट है वो बहुत कम है, तो हम उसको हाइट दे देंगे. हाइट टेबल की हाइट दे देंगे 200 पिक्सल्स. ओके. Ctrl+S. So friends, this is my final output of part 1 project. एंड आप जैसे कि देख सकते हैं यूज़र नेम पे आप अपना यूज़र नेम टाइप कर सकते हो. पासवर्ड की जगह पे आप पासवर्ड टाइप कर सकते हो. और पासवर्ड भी देखिए एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है. सो दिस इज़ ऑल फॉर द पार्ट 1. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ click the bell icon. Thank you.